हेलो गैस, तो ये वाले वीडियो में एक नया सेक्शन चालू करा है जो कि पॉडकास्ट वाला है। ठीक है, सो इसके ये जो पॉडकास्ट है वो मैं लैंडलॉर्ड का घर में रहता हूँ। वो यहाँ पे 2014 से है कनाडा में। सो उसका जो एक्सपीरियंस शेयर करा है उसके ऊपर ध्यान से सुनना, काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और रिसेंटली उन्होंने घर खरीदा, उसके ऊपर भी थोड़ी बात की। सो आप फॉलो करो, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लो अगर स्लो लगे, एंड एन्जॉय। हेलो भैया, कैसे हो? सबसे पहले थैंक यू मेरे वीडियो पे आने के लिए। ये वीडियो बनाने का रीज़न ही है कि मेरे जो फॉलोअर्स है उसमें काफ़ी स्टूडेंट है हमारी तरह, जैसे कि हम स्टूडेंट पे आए थे, और काफ़ी वर्कर्स भी है और पीआर वाले भी है। क्योंकि आप पहले स्टूडेंट थे, फिर बाद में वर्क पे आए और भी पीआर हो और साथ में नया घर भी ले लिया। आपका इनपुट शायद काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। हम डेप्थ में जाए कोई भी क्वेश्चन के, उसके पहले थोड़ा बेसिक बता दो कि आप यहाँ पे कौन से स्टेटस पे आए थे, कैसे आए थे, फिर उसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। Okay, perfect. So first of all, thank you for having me. Um, it will be a good opportunity to थोड़ा मेरा बहुत एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ. So again, thanks for this opportunity. मैं आया था 2000 बात करूँ तो about myself, my name is Jaykishan Shukla. मैं आया था 2014 अगस्त में. Obviously at that time rules and regulation काफ़ी अलग थे. बट मोटा मोटा सब कुछ सिमिलर ही थे. पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम थी. आई केम एज अ स्टूडेंट, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, स्टडीड इन सेनेका कॉलेज. 2 साल का मैंने स्टडी प्रोग्राम लिया था अकाउंटिंग में. एंड आफ्टर दैट 3 साल की वर्क परमिट एंड वर्क योर वे टूवर्ड्स टू गेटिंग नॉक लेवल बी, बिकॉज वो टाइम पे नॉक लेवल नॉक कैटेगरीज की पोजीशंस थी. सो नॉक बी वाज इनटू एज अ सुपरवाइजर और मैनेजरियल रोल. So I get into that, work my way. I work part time, different jobs, subways, convenience store, gas stations. Ended up in Walmart. Ended up in Staples as a supervisor, as an assistant manager. 2019 August में, luckily same month, में मेरा PR हो गया. And yeah, that's about it. So work your way towards, and it was a difficult journey because international students, people say it's it's more harder now, or more it was more easier now, but I think it's just depends on your pace, circumstances. So yeah, it is difficult now, maybe more, from what I see, depending on the market, depending on कहाँ पे रहते हो. But eventually I got my PR luckily in August, and yeah, that's about it. आपने कहा कि आप जब आए थे तब थोड़ा इजी था, और अभी क्योंकि डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि कैप लग गया है। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, मार्केट में क्या चेंज आता? फिर स्टूडेंट्स जो ऑप्ट कर रहे हैं वो लोग को अब आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? See, I can't comment on people's personal choices because थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और ऑडियंस में ऐसे भी है कि भाई इंडिया में है, कई लोग यहाँ पे है. So they still think that we are just being sarcastic about it. कि भाई अब तो हम यहाँ पे आ गए हैं. We tell people that think twice before coming. But I would say if you have a proper path in India, and अगर चल रहा है इंडिया में, तो moving here, first of all, it's an expense. मेरे टाइम पे $10,000 की GIC थी, अभी 20,000 की हो चुकी है. मेरे टाइम पे अभी भी ऑप्शंस थे कि भाई कमिंग इनटू अ प्लेस लाइक टोरंटो, यू स्टिल हैड सम चांस टू गेट अ PR हियर. अभी ऐसा है कि ओंटारियो में आ रहे हो, स्पेशली माय कैटेगरी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हु कैन बी इन अ साइंस और IT फील्ड. उन लोगों के सर्कमस्टेंसेस अलग रहते हैं. जैसे हमारे फील्ड वाले हैं अकाउंटिंग और BCom वाले या कॉमर्स फील्ड वाले, उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि you can't you come here but you can't get enough points as compared to like science field वाले बंदों के, या फिर again if you are doing masters or anything like that, so becomes a little bit difficult. So आने से पहले 2 बार सोचो. Even with any other stream, always think that which path will give you directly towards your PR. Don't select cities because in India में कई लोगों को होता है कि भाई टोरंटो जाएंगे तो
पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, मानी तो बाय एहसास के चल जाएगा तो नहीं मिलेगी, बट दैट्स अ शॉर्ट टर्म थिंग. सो व्हाई टू तुम शॉर्ट टर्म पार्ट टाइम गोल के चक्कर में यू आर सिलेक्टिंग अ प्रोविंस which may not give you a better chance of getting a PR. Yes, it's difficult, but if you think it through, maybe 6 महीने 1 साल जॉब नहीं लगेगी, घर के पैसे जाएंगे, कॉस्ट तुम्हारा बढ़ भी सकता है, लेकिन इवेंचुअली तुम्हारे पीआर के चांसेस बढ़ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशन. अभी रूल्स काफ़ी चेंज हो रहे हैं, कैप भी लग चुका है, बट अभी कैप है तो ऑडियो इज ऑब्वियसली यस मोर बिकमिंग मोर स्टिकर टू गेट, बिकॉज हाउसिंग सिचुएशन अभी यहाँ पे बहुत टफ हो चुकी है. तो आना चाहिए, ऐसा नहीं है. लेकिन अगर तुम्हारा इंडिया में अच्छा चल रहा है, इफ यू हैव अ पाथ टू फॉलो, इफ यू एंड डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली सिचुएशन, वहाँ पे चल रहा है तो यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली कॉस्ट्स आ जाएगा. और यहाँ पे आ रहे हो, अगर तुम साइंस और वो वाली फील्ड को बिलोंग करते हो, then it becomes maybe a little bit easier because there are certain pathways. You can get into MBA, or again you can get into any other fields that can easily, into technical fields that can get you PMP. So it's easier. I wouldn't say easier, but it's much easier than field which I came from, which is like BCom, like commerce field. हमारे जैसे लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है. 3 year का graduation, directly come here, you can't get into a master's program because here minimum requirement for master's is 4 year graduation. So it becomes more, whereas in engineering, 4 साल का अगर engineering करके आए हो आप, so it's easier to get into a master's program. Not easier, but at least you have that chance to get into a master's and then eventually land into a good job and make your work yourself way upwards. So depending on situation again. सो आपने यहाँ जब आने का प्लान किया था, मतलब आप भी स्टडी पे आए थे, ठीक है. सो जब आपने आने का प्लान किया तो उसका मेन रीजन क्या था, मेन फोकस क्या था, जो अब आपके हिसाब से चेंज हो गया? Okay, to be honest, why I came, it's always a mystery. लोगों का, मेरा खुद का मन था ऑस्ट्रेलिया जाने का, but at that time Australia was expensive. It was I think 5 to 10 lakhs cheaper. मेरे साथ मेरा एक बेस्ट फ्रेंड भी कर रहा था IITS में, तो we both planned, but again life has its own surprises. So उसका नहीं हुआ IELTS में. Luckily I got in the first attempt. I got enough bands. I wouldn't say pass or fail because it doesn't matter. I got enough bands to land into a Canadian college here in Toronto. So मेरा हो गया, उसका नहीं हुआ. He gave like 4 or 5 attempts, अभी तक नहीं हुआ. So it was unexpected. मेरा यहाँ पे आना, मतलब I didn't had a set goal कि भाई कनाडा ही आना है. I was thinking of something else, but I eventually, after doing all the math and thought the Canada में opportunity अच्छी है, as all the immigrants do, what is a better opportunity for you? I thought about that कि भाई नहीं, अभी कनाडा थोड़ा feasible option है. You may get into a path. वो टाइम तो मैं PR का भी इतना बता सोच नहीं रहा था, because at that time even if you're student level, I don't think people do think it through. अभी I think लोग ज़्यादा सोचते हैं. मैं जब आया था तब इतना भी मैंने सोचा नहीं था कि PR का क्या पाथ है. मैंने सिर्फ विचार सोचा कि भाई स्टडी करना है और इवेंचुअली कुछ आगे आगे करेंगे तो PR का पाथ हो जाएगा, क्योंकि वो टाइम पे थोड़ा इजी भी था. So that's how I came here. So again it was a surprise कि भाई कनाडा सोचा नहीं था. Then I ended up being here in Canada. Now it's almost 10 years. तो अगर कोई स्टूडेंट कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके चूज करता है अब के टाइम पे, तो क्या बेस्ट है? क्योंकि आप जो बात कर रहे हो 2014 का, क्रॉस 2014-15 का सिनेरियो, तो लेटेस्ट सिनेरियो के हिसाब से कौन सी जगह ज़्यादा बेटर रहेगी? I would always recommend कि भाई तुम्हारा गोल क्या है, शॉर्ट टर्म कि लॉन्ग टर्म. Personal preferences, I always think if you're investing that amount of money, it's not a small money. Per person, maybe you are spending Indian currency 25-30 lakhs upwards. So think it through कि अगर तुम्हारा परमानेंट हो रहा है कहीं पे भी, कोई भी कंट्री हो, pathways differs, but
if those pathways leads to you any permanent residency goal, that would help you. कई लोग ऐसा होते हैं कि भाई I don't know, depending on maybe UK or New Zealand, open work permit या close work permit में जाते हैं, and then they have to go back. It becomes harder for a person who is already settled here for a couple of years, and if they don't have a path forward after coming here कि भाई अभी तो मेरा होगा ही नहीं. For example, student में भी यहाँ पे आ जाते हैं टोरंटो में, फिर they don't think it through कि भाई अभी ये नहीं हो रहा है, and they have to go back. Maybe even for temporary they still have to go back because अभी भी फाइल पूल में अटकी हुई है, जैसे कनाडा का सिनेरियो है, लेकिन स्टिल आपको जाना पड़ रहा है 6 महीने 7 महीने जब तक प्रोसेस नहीं हो जाती, वर्क परमिट एक्सपायर हो रही है. तो वो सब सिनेरियोज को अवॉइड करो कि भाई ऐसा सिनेरियोज ना हो कि भाई आप अटक जाओ और वापस जाना पड़े, और देन यू आर बेसिकली all your investment is getting at one point. No doubt अगर आप पैसे बना भी रहे हो, आपने कवर अप कर भी लिया, but you still want to stay at one point. आप always think about कि भाई permanent कैसे हो. भले वापस इंडिया जाना हो, after PR you can still go back. After getting a citizen, people still go back. But have that thing always, क्योंकि इंडिया तो you are born and brought up in India, आपका खुद का birth certificate है, so it's good to go back. But at least you have this permanent here कि भाई कभी भी आना हो, family हो, उसको लेके आना हो, तो having that, I have seen people going coming. मेरी फुआ की लड़की की बात करूँ तो they were in Australia, moved back, had kids in Delhi, and again thought they want to move back to Australia, so they moved back. But why they can able to do that? Because they were Australian citizens. कि भाई किड्स थे, अभी लगा कि भाई नहीं इंडिया में नहीं चल रहा है, and they decided to move back to Australia. They can able to do that because they had those options. अगर कोई बंदा सारा कुछ कैंसिल करके जा रहा है and then you didn't think it through because it's always unexpected कि भाई आपको वापस जाना है कि नहीं जाना है, but have that thing in mind कि कोई भी परमानेंट करके जाओ, कि आना हो वापस जाना हो, it's always a changing situation. So permanent करके जाओ, जाना भी है वापस इंडिया, but whenever you are coming, it's always have that permanent path to your point कि भाई ऐसा path select करो कि you get your permanent residency or green card or something of that sort. Okay, so ठीक है, ये क्वेश्चन पे इसके ऊपर थोड़ा और बाद में इलेबोरेट करेंगे, वापस आपकी लाइफ पे आता है. सो आपने कहा कि आप स्टूडेंट पे आए थे, सीनेका से पढ़ाई की, ठीक है, सेनेका कॉलेज से. सो उसके अंदर आपका कोर्स कौन सा था, मेनली कौन सा फोकस था? ओके, सो मेरा बैकग्राउंड पूरा बैचलर ऑफ कॉमर्स का है. आई डिड चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज वेल. उसमें मेरे कई सारे अटेम्प्ट लगे थे, क्वाइट फ्रैंकली. सो मेरा पूरा बैकग्राउंड अकाउंटिंग का था. सो व्हेन आई वाज इन इंडिया, then it was suggested that I would take an accounting path. So I took a course which was diploma in accounting, 2-year plus course. तो उस हिसाब से मैंने depending on my background I selected accounting course. But right now I'm not even doing, my field is not even accounting, I'm in supply chain. So again it's different, you have to be flexible. So I became flexible. मुझे अकाउंटिंग की जॉब नहीं मिली, बट माई फील्ड इज डिफरेंट. आई एम राइट नाउ इन सप्लाई चेन. सो कोर्स अलग किया था, बट अभी जॉब अलग कर रहा हूँ. तो दोज आर द कॉन्सिक्वेंसेस यू हैव टू एक्सेप्ट. तो जो 2 साल का स्टडी था, तो उसका आपको कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब टफ होता है इंडिया के कंपैरिजन में, या इंडिया के कंपैरिजन में अगर आप, जैसे आपने कहा कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी एग्जाम दिए, यानी उसका भी आपको एक्सपीरियंस है, तो उससे कंपेयर करें यहाँ की पढ़ाई, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा इजी कोई भी स्टूडेंट के लिए पढ़ना? या तो सपोज कोई अगर हमारे ऑडियंस में से चार्टर्ड अकाउंटेंट करने का प्लान कर रहा है इंडिया में, और वो सोच रहा है कि उसको कंपेयर करें उसकी स्टडी यहाँ पे कोई मास्टर्स से या तो फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा से, तो इजी दोनों में से कौन सा है जिसके अंदर वो आसानी से पास आउट हो सकता है अच्छे मार्क्स से? अगर आप जैसे ही डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हो, आई वुडंट से इजी और एनीथिंग, आई वुड से इट इज डिफरेंट कि भाई इंडिया में कैसा है एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पे कैसा है. क्योंकि यहाँ पे जो भी आप असाइनमेंट करते हो, इट काउंटेड एज अ परसेंटेज, एंड एट द एंड ऑफ दैट कोर्स
total it counts as 100%. So everything matters. इंडिया में ऐसा नहीं होता कि भाई फाइनल एग्जाम है तो फाइनल एग्जाम ही है. एंड यू नो मैटर आप assignments में आप अच्छा नहीं करते हो, but at the end you still have final exam and you clear it out. Here is different, which is I think a good thing कि भाई आप फोकस आपका हर टाइम का. तो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे इजी होता है, इंडिया में तो ऐसा नहीं है. यहाँ पे भी कोर्सेज है जो हार्ड होते हैं. दे मोर फोकस ऑन थ्रू आउट द कोर्स रादर देन एक फाइनल एग्जाम दे दो और निकल जाओ. तो डिपेंड. अगर आप बात करते हो इंडिया में किसी ने सीए किया है, देयर आर पाथवेज हियर. जैसे चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटिंग का कोर्सेज है, लोग यहाँ पे सर्टिफिकेशन लेते हैं, उसकी ऑब्वियसली पढ़ाई करनी पड़ती है. So there are pathways here. I thought of those pathways. Again, it takes time, takes money. Plus, you have to maybe pause your job or do part time to dedicate it towards those CPA courses here. But you can do that. Easy or hard, that depends on the course. That depends on your person to person as well. मेरी बात करूँ तो at one point even in accounting I was almost failing in one of the courses. So that's an honest answer because I thought that it's easy, way too easy, but I take it lightly. So लग गए थे, to be honest. So you don't take it lightly. That's the first thing. Yeah. But it depends on person to person. Here accounting में formatting पे यहाँ पे ज़्यादा focus करते होंगे. I believe जो भी account audience होगी उसमें accounting किया होगा, they focus on the formatting and the balance sheet rather than just telling the balance sheet. So I hope these people knows about it. So depends on different person how hard or easy it is. But it's good to focus right from the beginning. So मुझे नहीं लगता कि hard or easy. There is no one answer to it. Okay. So हाँ, तो जो भी चार्टर्ड वाले सुन लो, अभी देख लो क्या करना है आगे. तो थैंक यू इनपुट के लिए. तो वापस आते हैं आपकी लाइफ की जर्नी पर. तो आपने पढ़ाई खत्म की, कौन सी ईयर में खत्म किया आपने पढ़ाई? 16 में मैंने खत्म की, अप्रैल 16. अच्छा, मतलब आपने जब 16 में एग्जाम खत्म की, उसके बाद लेट्स से आपने 16 कौन से अगस्त में खत्म की होगी, मे बी अगस्त या सितंबर या अराउंड जून जुलाई में मैंने जून जुलाई में खत्म. It's been long, so hard to remember exact month. तो उसके कितने टाइम में आपको जॉब मिली थी, मतलब कितना टाइम लगा था, महीना, 2 महीना, 6 महीना? Okay, so my journey was quite different. It took me exact 1.5 years to land into a knock level B job. तब तक मैं part time full time करके जॉब कर रहा था, but it was difficult for me to get into a knock level B job. So I had to wait almost मेरी लग गई थी, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि 1.5 साल मैंने वेस्ट किया था वर्क परमिट में. और मेरी वर्क परमिट में भी ऐसा आया था कि I got a 2-year work permit instead of 3 years. So I had to fight my own case to get a 3-year work permit extension. So there were some circumstances happened. I wouldn't comment or name the person who filed my work permit, but I filed with him. Unluckily, I got 2 years instead of 3 years. Then I thought that not to go with the immigration lawyer. I fought my own case. So उसके चक्कर में मेरे 6 से 7 महीने बर्बाद हो गए, because you have to file your own case. You have to go through that all that tensions that क्या होगा 2 साल में, तो हो ही नहीं सकता. So I lost 6 or 7 months. फिर ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद मुझे नॉक लेवल बी की जॉब मिली. एंड देन 1 year ऑफ मेरा कंप्लीट किया, 1 year एक्सपीरियंस. फिर पॉइंट्स बढ़ रहे थे, मुझे 2 बार आईएलटीएस देनी पड़ी बिकॉज ऑफ द पॉइंट्स आर गोइंग अप. एंड आफ्टर आई थिंक इन January or February of 2019 I had enough points and मेरा इन्विटेशन आ गया. और तब मेरी वर्क परमिट ऑलमोस्ट जुलाई में खत्म होने वाली थी. So it was cut to cut. Okay. And then I also had to file my work permit extension because I overlapped it, क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा है. तो obviously मुझे लगा था, मैंने और मेरा फ्रेंड ने साथ में ली थी. Luckily he got it in, I would say, June. He got his PR confirmation in June. My case
was unique, so it was pushed back and I got it in August. So to cover up that period मुझे वर्क परमिट का एक्सटेंशन डालना पड़ा. So again it was a tough path. मेरी वर्क परमिट भी 2 साल की हुई थी. खुद ही मैंने फाइट किया केस CIC को कि भाई रीजनिंग दी है कि भाई 2 साल का कोर्स किया तो 3 साल की मिलनी चाहिए. तो 6-7 महीने उसमें चले गए. बट लकीली उन लोगों ने फिर से रिन्यू करके मेरी 3 साल की वर्क परमिट कर दी. And then after 1.5 years, luckily I found a knockbeat job. And I become a PR in August 19. अच्छा, तो अभी आपने 2 चीज़ों की बात की. एक तो आपने कहा कि आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट है वो लेट हो गया था, तो आपने खुद का केस फाइल किया. तो अब मोस्टली ये बहुत कॉमन है इंडिया में भी कि काफ़ी कंसल्टेंट फ्रॉड करते हैं कि लोगों से पैसे ले लेते हैं वर्क परमिट के नाम पे यहाँ पे भेजने के लिए, और फिर बाद में वो लोग आई थिंक कभी भेजते नहीं है और ना ही उनके पैसे वापस मिलते. तो लेट्स से यही चीज़ आपके साथ कनाडा में हुई थी और इनके साथ अगर कोई और हो और उसके साथ भी यही चीज़ हो, तो वो कैसे लड़े, उसको कैसे ओवरटेक, यानी आपने कैसे किया था, वो थोड़ा बताओ. I would say always do your own research. Don't just trust on any consultant. कोई भी कॉलेज का नाम कंसल्टेंट बोलते हैं, अगर आप इंडिया में, it's good to go to their website, maybe email their departments, any of the international student department होता है, सर्च करो. I believe कभी-कभी तो ओपन हाउसेज होते हैं, कई वर्चुअल ओपन हाउसेज होते हैं कॉलेज में. यहाँ पे एक नई सिस्टम है कि भाई कोर्स शुरू होने से पहले इन पर्सन ओपन हाउस होते हैं जो कोर्स की डिटेल्स देते हैं. कई बार वर्चुअल भी होते हैं. सो do some research rather than just trusting your consultant blindly. Also do your research on कि भाई कौन सी कॉलेज अच्छी है. नॉट ओनली कि भाई कॉलेज मिल रही है, कि भाई कॉलेज अच्छी है, आपकी फील्ड में अच्छी है वो कॉलेज. कई ऐसी कॉलेज होती है, कई कॉलेज हेल्थ केयर की फील्ड में अच्छी होती है, कई कॉलेज में भी IT की फील्ड में अच्छी है. तो फील्ड के हिसाब से भी देखो कि कौन सी कॉलेज अच्छी है, और साथ ही वो भी देखो कि भाई तुम्हारे इमिग्रेशन के कोई उसमें कंसर्न है कि नहीं है. सो इट इज़ हार्ड, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा खुद रिसर्च करने में. पैसा देकर तो सब कंसल्टेंट पे भरोसा कर सकते हैं, बट डू योर रिसर्च. सिंपल है. सो मतलब हमने जो कन्वर्सेशन की इसके अंदर आइल्स की भी बहुत बात की है. अब काफ़ी लोगों को आइल्स के बारे में पता नहीं है. सो पहले आप बता दो आइल्स है क्या, और दूसरा बता दो उसमें कोई मिनिमम स्कोर चाहिए, या तो फिर कितना स्कोर लायक हो तो फिर उसको बेनिफिट हो सकता है. So it's been a long I give my IELTS. So I think उसमें 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं: रीडिंग, राइटिंग, listening, speaking. 4. Yeah. So pass or fail कुछ है ही नहीं उसमें. It depends on band. Highest I believe is 9 band. So कनाडा में मिनिमम रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मिनिमम 6 ईच बैंड होने चाहिए, और ओवरऑल 6.5 to 7 बैंड. आई थिंक अभी थोड़ा बढ़ गया है. मैंने 7 बैंड लाया था एंड आई वाज मोर देन 6 बैंड ईच. सो it is, I would personally say it's quite easy. I don't know why people think that it's a hard one. For me it's quite easy. मेरा first time में हो गया था. जनरल कैटेगरी में मेरा second attempt was really good. I got 9 out of 9 in listening. So I don't think the IELTS hard होती है. You just have to practice it. Maybe watch some Netflix English content. That will help you. So it's pretty easy. Okay. So I think जिनको भी IELTS ज्वाइन करना है या तो फिर IELTS करना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये अच्छा इनपुट था. थैंक यू उसके लिए. सो वापस चल गया कि लाइफ की जर्नी में. सो आपने कहा कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट ली, उसमें थोड़ा टाइम दिया और उसके लिए आपको काफी स्ट्रगल भी करना पड़ा. तो आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट आपको मिली, तो आपने कौन सी पहली जॉब थी जो स्टार्ट की? I was already doing a part-time job in Walmart and Home Depot. पहले आप कंटिन्यू करो. तो वॉलमार्ट और होम डिपो क्या है, एक थोड़ा सा मतलब बता दो. Okay, so Walmart, I think most of the people knows about Walmart. It's
retail super chain, just like I think India में भी Star Bazaar या Big Bazaar और Reliance होगा वैसा. So it's a famous North American company. So it's a big retail store, groceries वगैरह मिलती है, in and out सब कुछ चीज़ें मिलती है एक बार आप उसमें जाओ. तो I was working as a sales associate there. होम डिपो एक ऐसा हार्डवेयर स्टोर है, वहाँ पे भी मैंने पार्ट टाइम जॉब कर रहा था. सो दोनों जगह पे मैं पार्ट टाइम जॉब मेरा थोड़ा ऐसा था कि मैंने जब से पार्ट टाइम जॉब चालू की यहाँ पे, मैंने गैस स्टेशन और सबवे में किया, बट आई नेवर स्टॉप. कई लोगों को ऐसा होता है कि भाई पार्ट टाइम जॉब मिल रही है, आवर्स अच्छा है, शेड्यूल फिक्स है, जो स्टडीज भी हो रही है, तो लोग जंप नहीं करते सिक्योरिटी के लिए, वॉट एवर अदर रीजन कि भाई अभी चल रहा है अच्छे से. बट आई कीप ऑन अप्लाइंग बिकॉज आई एट वन पॉइंट न्यू इट कि भाई मे बी सबवे में कर रहा हूँ तो वर्क परमिट में सबवे काम नहीं आने वाला. सो आई केप्ट ऑन अप्लाइंग इट एंड लकीली इन आई थिंक इन 2014 April I already got a Walmart job way before I got my work permit. So I kept on applying it rather than just sitting on doing gas station or convenience store jobs. So it's always good to keep on applying it. Maybe एक step above जाओ, थोड़ा inconvenient होती है, studies में भी कभी-कभी affect होता है, मेरा हुआ है, but I think that experience helped me to get into a knock level B job, because now I was working in a company like Walmart or Home Depot. So it always helps you somewhere or the other. तो एक स्टेप आगे बढ़ने में आपको थोड़ा इजी रहता है कि भाई आप थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा रहता है. तो आई डिड दैट. नो डाउट इट डिलेड मी, इट वाज अ रिस्क एज वेल. 1 साल के बाद मुझे नौकरी भी जॉब मिली. दैट एक्सपीरियंस काउंटेड. कई लोग ऐसा होते हैं कि भाई सबवे में मैनेजर की जॉब करते हैं, पीआर तो हो जाता है, बट आपका फ्यूचर क्या, करियर क्या है. सबवे में क्या है, सिर्फ सैंडविच बना के या तो फिर गैस स्टेशन में या कन्वीनियंस स्टोर में कहाँ तक सर्वाइव करते हैं. फिर इज नो, या तो फिर खुद का करो या तो फिर यू आर स्टक. आई हैव सीन पीपल डूइंग गेटिंग अ सिटीजन एंड स्टिल डूइंग गैस स्टेशन जॉब्स or convenience store jobs. It's just job, not even owning their own business. So I wanted to avoid that scenario so that at least have some career path. So मैंने, it was hard, it was challenging. मैंने रिस्क लिया, 1.5 साल बाद मुझे जॉब मिली वर्क परमिट के, but it helped. So it has its own consequences. तो ऐसी सब जॉब आपने की है, तो इससे इंसान में हम्बलनेस आती है क्या? Well, it depends. You get experience. I won't say humbleness or anything. I won't comment on. But क्योंकि काफी लोग इंडिया में ऐसे होते हैं जो कि फैमिली के साथ रहते हैं, मतलब वहाँ पे ऐसी कोई जॉब नहीं करता जल्दी, तो यहाँ पे आके वही जॉब करते हैं. तो it is a learning curve, I would say. So plus a language barrier. So I would say it is an experience to have people skill. Basically, that's the basic thing you require here. तो yeah, it's a good start. एक्सपीरियंस भी होता है, एक्सपोजर भी होता है. ओवरनाइट शिफ्ट करता था मैं. There were some tough times. You get robbed in the store and things like that happen. It's again Canada. People say that it's the safest country, but no, you get robbed. You get beaten. Friday nights में करता था. So yeah, it has its own, but that gives you an experience, which always it's helpful. So आपके साथ हुआ क्या ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाहो? Yeah, sure. So I used to do gas station job in Scarborough. Friday night was my shift. So yeah, लोगों ने रॉब करने की भी कोशिश की है. You don't resist. It's not your store, or your life is more important. So they ask for money, you give them money and just be cool about it. So हाँ, हुआ है, लोगों ने मारा भी है, तो होता है, क्या करें. तो ऐसा एक्सपीरियंस बाद ऐसा नहीं होता कि घर चले जाए, यहाँ पे इतना एनर्जी, टाइम, या तो फिर कुछ भी वेस्ट? Maybe at that time, yes, you think, but after now I'm here almost 9 years.
it is an experience. So I think mostly जो रिटेल फ्रंट में से कन्वीनियंस स्टोर में वगैरह में जॉब करते हैं, छोटे स्टोर्स में लोगों के साथ कभी कभी डिपेंडिंग ऑन द एरिया एक्सपीरियंसेस होते हैं. सो इट इज़ एन एक्सपीरियंस. मे बी यू डोंट लाइक इट एट दैट टाइम कि मैं कहाँ पे आ गए यार, कहाँ इंडिया में थे, आराम से बैठ के चिल मार रहे थे, अभी आ गए. तो या एट दैट टाइम इट फील्स, बट आई थिंक आफ्टर पासिंग थ्रू दैट, when you look back, I think it was an experience. Just take it like that. तो अभी आपका जॉब पोजीशन क्या है, मतलब अभी आप क्या करते हो? Well, I'm working in a distributor, as a in a distribution company. As a supply chain manager, or you can say product manager. अभी 3 साल ही हुआ है जॉब में. सो हाँ, 3 साल से वही जॉब कर रहा हूँ. मेरा रिटेल का एक्सपीरियंस था, सो आई वर्क माय वे अप as a distributor who is now supplying to all the retailers. So मैं as a product manager अब जॉब कर रहा हूँ as a distributor. I won't comment on the company name or anything because I still work for it. So हम कोई कॉपीराइट नहीं चाहिए तो. yeah, so exactly. सो आपने कहा अभी आप प्रोडक्ट मैनेजर हो, सो आप रिटेल में थे, तो रिटेल से प्रोडक्ट मैनेजर आई थिंक काफी काफी चेंज होता है, काफी पोजीशन भी होती है. सो ये जॉब आपको कैसे मिली, मतलब किसके थ्रू मिली या कौन सा प्लेटफॉर्म था, या तो ऐसा था आपने क्या क्या किया यहाँ तक पहुंच? Well, it was again, I had all my surprises even after getting my PR. So 2019 I got my PR. Unluckily, COVID happened in April 2020. So I was working in Staples. I got laid off 1 year. So I had to do odd jobs again. So circle back, restart again with zero. So laid off for 1 year, did odd jobs again. Then I again find another job in a retail, which is a company called Canada Computers. Worked as a supply chain manager over there. Still again मेरा वही था कि भाई always look out for opportunities. अब मैं internally or externally I always look out for opportunity. And then I was doing well. Didn't have plans to move out from Canada Computers, but suddenly I got an communication from the current company that do you want to come to their place, and after doing the thorough analysis I moved. So ऐसे ही मुझे 1 साल का गैप हुआ, I would say, because of the COVID. Again circle back to zero, but I keep on applying. It's still going back to zero, especially after now you're a PR. You didn't wish that would happen to you, but it happened. 1 साल तक मुझे फिर से और जॉब्स करनी पड़ी, but I again being persistent, keep on applying. वापस मैं मेरी फील्ड में आ गया. एंड मे बी वो गैप था, थोड़ा बहुत पुशबैक हुआ. आज भी मे बी आई वुड थिंक दैट मे बी वो 1 साल नहीं होता तो मे बी आई वुड बी लिटिल बिट बेटर, बट हैपन इट हैपन. सो नाउ आई एम इन दिस कंपनी. सो मतलब जैसे आपको कोविड में हुआ तो वैसा सबको ही हुआ था, मे बी स्टूडेंट्स को भी हुआ था. सो कैसा लगता है कि मतलब जब आप एक अच्छी जॉब कर रहे थे, फिर पार्ट टाइम पे आना पड़ा जहाँ पे पे फिक्स नहीं था, काफी लोगों का ऐसा हुआ. सो क्या उससे क्या मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है या क्या होता है आपके तरफ से? वेल आई एट वन पॉइंट यू स्टिल थिंक, पर काफ़ी जगह पर जब मैंने और जॉब्स की, आई हैव सीन पीपल हु आर डूइंग वे बेटर जॉब्स इन मी, especially aviation field. They're doing jobs with me, like odd jobs with me. Right? I have seen aviation engineers who just get out of the aviation schools. उन लोगों को तो था कि भाई अभी क्या है, प्लेन उड़ाना है, या तो फिर ऐसे बैक एंड सपोर्ट में डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी. मार्केट बूमिंग था, वो लोगों का ऑलमोस्ट पाथ क्लियर होता है. उन लोगों को ऐसा ही, इट वाज अ शॉक टू देम. Instead of getting into the high packages job, they were almost working with me. I have seen pilot doing DHL delivery jobs and Uber food delivery. So yeah, it was a shock, but फिर ऐसा लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ.
मेरे ऐसे भी लोग हैं जो जिसकी अच्छे से लगी हुई है क्योंकि वो लोग हाई पैकेज पे होते हैं obviously they bought their houses at the time I did house and they had to go through this so it was more difficult so you are not the alone I think maybe you think it's difficult for you but there are people out there maybe more difficult so by looking at that I think you just have to take it simple as that so आपका मैरिज स्टेटस क्या है मतलब मैरिड हो yes I am married तो आपकी वाइफ अभी मतलब कनाडा में है या अभी भी इंडिया है no she is in Canada luckily I found her in Canada oh so yeah so we are married since 1.5 years वैसे थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आपके हिसाब से क्या कैनेडियन लड़की अच्छी होती है इंडियन लड़की अच्छी होती है that's a difficult question I wouldn't comment about that one but it depends I think is rather than you selecting a place you select a person right so don't select a place select a person because place doesn't matter person matters उसके साथ ही रहना है so place is better person is better तो मतलब आपके हिसाब से इंडियन लड़कियां नहीं अच्छी होती है सर या कैनेडियन लड़कियां again it's person I won't comment on that मेरे ऐसे friends हैं जो इंडिया से married होके आए हैं they don't have any problems मेरे ऐसे भी friends हैं जो यहीं से लव मैरिज भी हुए यहीं से अरेंज मैरिज भी हुए they are all living there are things happen again मेरे ऐसे भी friends हैं जो इंडिया से मैरिज करके भी आए and then things didn't work out और ऐसा भी friends हैं जो यहाँ से मैरिज भी कर लिए and then things didn't work out so it's always you never know so don't select a place or places that इंडिया से होगा तो ऐसा होगा यहाँ से होगा सबके अलग अलग चैलेंजेस होते हैं अलग अलग फेस होता है बट आई थिंक इट डजंट मैटर इंडिया से हो कि कनाडा से हो सो ऐसा होता है कि मतलब सपोज कोई लड़की है जो कनाडा में ही पली बड़ी है या तो वो यहाँ पे स्टूडेंट की तरह आई थी तो उसके लिए सिचुएशन समझना इजी रहता है कंपेयर टू इंडियंस Yeah, I would say maybe yes. The situation यहाँ पे अगर especially if you came as an international student, you know the difficulties, you know the environment, तो थोड़ा not easy रहता है, थोड़ा understanding रहता है कि भाई these are the things maybe India से कोई आ रहा है, they may not know until they are in India, but once they come here. I think they would know that this is the thing. So, थोड़ा बहुत होता है, but it again depends on the person who's understanding. जैसे इंडिया में भी होते हैं कि भाई jobs करते हैं, ऐसा नहीं होता कि भाई study करने के बाद job करते ही नहीं है. If they do jobs and they know how the market is, they become mature enough. So it depends. Again, it depends. So वैसे अभी लास्ट सेक्शन में आ गया इंटरव्यू के सो पहली बात तो थैंक यू पॉडकास्ट में आने के लिए और लास्ट जो क्वेश्चन है मेरा तो जैसे आपने अभी नया घर लिया तो थोड़ा बताओ कि आपने कैसे लिया ये नया घर या अगर किसी को लेना है या तो कोई ऐसी बात पे जिन्होंने घर लेने का प्लान करा है कनाडा में तो वो कैसे ये ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं Okay, so first of all, it is challenging. Obviously, I would say the market is also challenging, but you have to be patient. And personal level तो देखो मुझे आप ही मिल गए you were living with me when I was in Toronto so and you moved with me as well so I think friend circle also matter friends who help out each other matters I have my friend who I was living with him for almost throughout 6 years when I was in Canada so friends help each other down payment होता है friends help होता है here I didn't had my any family friends became your family friends help out difficult होता है depending on your financial condition but I think Canada में at one point is important to have your own real estate because rent में पैसा तो या खुद के घर में पैसा तो maybe तुम्हें थोड़ा sacrifice करना पड़ेगा कि भाई you live with you may have to rent out rooms or rent out your basement or something like that people do that it's not uncommon over here I'm still doing it मैंने ज़्यादा ही डाउन पेमेंट किया था वन कमेंट ऑन द अमाउंट तो
I had my situation different, maybe compared to another person who is my friend, who's okay with it, not having roommates. So I did that, but I still took that decision कि भाई real estate होना चाहिए at one point, because that makes things easier. You can settle down. तुम्हें इधर उधर लीज एंडिंग के वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पढ़ना पढ़ सकते हैं कि भाई कई बार होता है कि भाई 1-2 साल के बाद लैंडलॉर्ड बोल देता कि भाई आई एम एंडिंग योर लीज और समथिंग लाइक दैट. सो खुद का हो तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव. ओके, सो या थैंक यू पॉडकास्ट में आने के लिए. और सेकेंडली अभी तो वैसे आपकी लाइफ के ऊपर थोड़ी बातें की है. आई होप अगर पॉडकास्ट अच्छा गया तो आगे थोड़े और टॉपिक्स पे थोड़ा बेटर डिस्कशन करेंगे डिटेल में कि आपने घर कैसे लिया, तो आपने जॉब कैसे ढूंढी वैसा. सो या जयकिशन भैया थैंक यू बहुत सारा पॉडकास्ट आने के लिए एंड सी यू लेटर. थैंक यू.